Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss on price movement of any stock or index, and we will see whether the move is supported by money flow, whether this move is genuine or it is just a speculative move. For same, I have created an Excel file and I will provide you that Excel file too. It's an automated Excel file. It's kind of semi-automated Excel file. You need to do some work EOD. It will take hardly 1 or 2 minutes. But still I will put some term and condition for same. If you want to get that Excel file, I will just tweet about this Excel file and I will post video also. And what your task is, you just need to retweet it, and the target for retweeting is almost 50. So if we get the target, I will share the Excel file with you. And those, if we are not getting our target, if we are not meeting our target and still you want, then you can just DM me. Then there is some charges for same, but I am not saying you to pay me anything. If I am just asking for the retweet, if you guys can do this, then it's of free of cost. So let's see which Excel file I'm talking about. So this is the Excel file. See, this Excel file name automated equity Excel SM file. It's a macro enable Excel file. So if you get this file, so you need to, first of all, you need to enable the macros in your Excel. How to enable macro? You can just go Google and you will get many YouTube videos for same. So for this, first of all, I am telling you how you can update this file. End of the day, this is an EOD Excel file and this is fetching data from NSC. I have inserted some formulas, we have done some calculation to get the beneficial results. So you can see this is we are taking data from last 13 days and then we are doing some analysis on the data. See, you can see we have data from 31st of October to 8th of December, right? So I will upload the latest data in front of you and you will get to know how much time it is taking. So first of all, we will just go in the current date column and just change the date to the latest, and the latest trading day was 9th of December. So what I will do, I will just change the date to 9th and then we will click on this button that say click on 7 PM. As soon as click, you will see the date of this F column is changed automatically. So what we need to do, we just need to hit this copy button and entire data will be copied. And first, one thing that you need to do, you need to go this OI section. OI stands for open interest, and here currently we have last 12 days of data, and I will update 9th of December data in front of you. For getting this data from NSC, you need to go to this link. I will attach this link also, so you will get directly you will able to directly open this link, and we need to go derivative section. Under derivative, suppose you are not able to you forget to update your file, so for historical files you will need to go to this column, all historical reports. And if you are updating regular basis, then you just need to press this. Wait, let me check. NSCOI. Yeah, you need to just download this file. As soon as you will click, the file will be downloaded. We will open this file. We need to open this Excel file. So here is the file. So now what we will do, we will just move the date column to C, script name. What I did, I just press Ctrl X and Ctrl V. I just cut the data from column A and I inserted the data in column C. And again, what we need to do, we just need to shift the data, NSCOI, Ctrl X, and we'll shift to the E column, that is MWPL, market wise position limit. Right, so now the data is shifted. What we need to do, we need to just select the data from C2 to Control Shift right arrow, the entire data will be selected, C2 to E2, and then we will press Control Shift down arrow, the entire data will be selected. Then we will select we will just hit Control C, the data will be copied, and then we'll come to our main file. This is our main file. This is, you can see, this is last 12 days of data. You can see I have taken data from 23rd of November to till 8th of December. So this is last 12 trading days data, and for updating the last day of data, we just need to come over here and Control V. So now we have last 13 days data. So now tomorrow, if you want to update this file, first of all, what we need to do, you just need to come over here and you just need to delete the
first day of data. So here you can see this is the 23rd of November. So what we'll do, हम लोग यहाँ पे इस डेटा को रिमूव करेंगे. What we'll do, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल, first of all let me save the file. Now the data is like we have data from last 13 days and till 23rd November to 9th of December we have data from last 13 days. You can see the count is 13. So suppose you are updating this file tomorrow, like, so you will get the data of 12th also. So in this case आपको क्या करना है, you just have to delete the first day of data. Like first day means जो हमारा historic like past का जो पहला दिन होगा, मतलब we need to delete 23rd of November data, right? For this हम लोग क्या करेंगे, we will just go to the last day of 23rd of November, last file जहाँ पे भी last आ रहा हो 23rd का data, and then we will just control shift right arrow, control shift up arrow, and then हम लोग we will just delete, just first of all let me save the file is saved. We will just delete the data, हम लोग ने यहाँ पूरा delete कर दिया, and then we will select from the 12th day का data हम लोग select करेंगे, and then we will again press control shift right arrow, control shift down arrow, and this time we are not going to press control X, because then if you press control X the formulas will be deleted. So what we will do, we will just press control C, we will copy the entire data and come over in the B2 column and control V. Now watch carefully what we are going to do. अब यहाँ पे we will go downwards और यहाँ पे जहाँ तक का data है, यहाँ तक you can see the data is still 2305 column. So what we will do, यहाँ से हम लोग 2306 column को यहाँ से नीचे पूरे delete कर देंगे. अब यहाँ जो हमारा 11th 12th का जो डेटा आएगा वी विल जस्ट यहाँ के हम लोग पेस्ट कर देंगे, राइट, सेम प्रोसेस से. अब वीडियो को दूसरी बार ज़रूर देखना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, राइट. तो अभी हम लोग उस फाइल को क्लोज कर देते हैं, फिर मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ उस फाइल को. तो ये थी हमारी फाइल ऑटोमेटेड इक्विटी एक्सेलिज्म. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, या दिस इज द फाइल. And now we will come to the analysis sheet. What we need to use, we just need to use this main file for updating data, OI file for manually updating OI data, and then for analysis we will go to analysis file, right. And here you can see the data is from last 14 days, and this is like averages. What we are doing, we are taking the averages of averages of delivery quantity, averages of number of trades, and averages of OI. And we are also calculating money flow. You can see the money flow calculation is visible in front of you. So what we are doing, and we are also using the logic of the simple logic, like if the price is increasing and OI is also increasing, that means somebody is interested in buying, so we will consider it as a fresh long position. And similarly, if the price is decreasing and OI is increasing, we will consider it as a fresh short. This theory you will get easily on Google and YouTube. आप उसको देख लेना. This is not any like, ये आपको easily कहीं पे भी सब जगह available है, right? So you can see here, this is the all stocks. आपको यहाँ पे कोई और stock भी ऐड करना है, you just need to like उसका symbol name आप कहीं पे भी यहाँ mention कर दोगे, वहाँ पे click करोगे तो डेटा आ जाएगा, right? सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए ACC डाल देता हूँ. हालांकि ACC इस लिस्ट में होगा, बट स्टिल आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. सी, यू विल गेट द डेटा, फिर ACC, राइट. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी के जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं मैंने सबको यहाँ पे मेंशन कर रखा है. एंड आई यूज टू जस्ट चेक द वेदर विच स्टॉक इज़ डूइंग परफॉर्मिंग और विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग. सो आपको यहाँ पे एनालिसिस कैसे करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी, दिस इज़ TCS चार्ट, राइट. सो अभी चलते हैं TCS के डेटा पे. लेट मी क्लोज दिस फाइल. Okay, now so let's check the TCS. Where is TCS? Yeah, this is TCS, right? So you can see the TCS is indicating that there is from 1st of December continuously the price is decreasing and the OI is increasing, which interrupt that somebody is creating fresh short positions. And if you see the average also from the last 11 days, 8 days, 5 days, 3 days, all averages OI is also suggesting that someone is like interested in shorting this stock. Now this is like future position is is only speculative, right? सब वहाँ पे कोई speculate कर रहा है. If we focus on delivery, whether the stock movement is like यहाँ पे कोई डिलीवरी ले रहा है या कोई डिलीवरी छोड़ा, that is like genuine ना.
क्योंकि कैश मार्केट में जब आप डील करते हो वो आप जो है स्पेकुलेटिव नहीं है, वो आपने वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना व्यू बना के रखा है, राइट। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी जब मनी फ्लो जो है यहाँ पे आप देखोगे लास्ट 3 डेज से, इफ़ यू चेक लास्ट 8, 5 और 3 डेज, इफ़ यू डूइंग फॉर शॉर्ट टाइम तो आप ये 3 डेज का चेक किया करो, 8, 5 to 3, राइट, कंपेरिजन में। तो मनी फ्लो इज डिक्रीजिंग, राइट, 37 से 25 हुआ, 27, 25 से स्लाइटली डिके हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। And you can see the BP, they stand for big players, whether the big players are active or not, right. So this is indicating neither like big players are also not activating because the number is in decreasing format, and OI is like money flow is also decreasing, whether means कि यहाँ पे जो है ये money flow यहाँ पे अब ज़्यादा हो नहीं रहा है, right. सो वॉट वी नीड टू डू, नाउ वी जस्ट नीड टू, आपका कोई भी सेटअप हो, आप RSI में कोई भी सेटअप आप यूज़ करते हो, उसमें आप यू नीड टू चेक कि यहाँ पे जो है ये अब यहाँ पे यू गॉट टू सी कि यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको आपके सेटअप से कहाँ मिलती है, राइट। लेट मी शो यू, इफ़ यू प्लॉट ए ट्रेंड लाइन ओवर देयर, या सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट। तो अभी यहाँ देखो ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर हम लोग उसको जॉइंट लेंगे, इफ़ यू कंसिडर दिस एज ए लाइक पीक को आप इसको कंसिडर करो, एक सेकेंड। सो वॉट यू विल सी दैट यू आर लाइक the price is halting near trend line, and then now you have to check the long opportunity in TCS, because the data is also suggesting that though somebody is creating short position, but still the big players are not active, nor the delivery is increasing, right. So now I think you should check some like opportunity for going long in TCS, right. So this is only for like whether the move is genuine or not. Now we can like how we can use this file for intraday. So mainly I do trading in bank nifty only. So what I do, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I just check all these stocks and like you can see यहाँ पे if the number is last date data, number is highlighting, that mean नेक्स्ट डे उस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी गेम, राइट। यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट नहीं होता है। सो इफ यू चेक SDFC बैंक, जिस यू कैन सी द 9th of December डेटा, द डिलीवरी परसेंट इज ग्रीन। जस्ट लुक एट दिस column and see the whether it is green or not. If it's green, that's mean next day there is a high probability that we can get a good move in bank nifty with the help of SDFC bank, right. तो यहाँ पे अभी डिपेंड करता है, यहाँ 3 SDFC के साथ एक दो स्टॉक और if like apart from SDFC, whether Kotak Bank or ICICI Bank or SBI, any other bank, any other bank out of these 6 banks supporting the data, that means where tomorrow we will see the long opportunity in bank nifty, right, because SDFC bank have the highest weightage in bank nifty. So let's check कि यहाँ पे क्या क्या और कौन कौन से स्टॉक में कहीं पे हम लोग को ऐसा डेटा दिख रहा है. So we are not getting any data from any stock. So for intraday tomorrow we will keep SDFC bank on our radar. Let's check the SDFC bank chart. Sorry, yeah. Okay, so this is SDFC bank chart, right? So what you can see यहाँ पे, see the price is trading near this high levels, right? तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे होल्ड कर गया, right? If it has to go down तो यहाँ पे अच्छा आपको रिटेस्टिंग जोन यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करने आ जाता, बट वहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट नहीं हुए. लेट्स चेक द डेटा फॉर SDFC फर्स्ट. So SDFC bank data, what is suggesting, the delivery percent is increasing. You can see 23, 74, 75, 75, and big players are also last. If you see the comparatively big players, then you'll get to know that big player is like from 5 to 3 days. If you see, check the comparison, then it is in increasing mode, and the money flow is also in increasing mode. So I told you, if this is green, and it's good for next day intraday. So for next day intraday is like 3 to 5 is more than enough. So 5 to 3 ratio, if you'll check, the delivery is increasing, the big players are also increasing, money flows are also increasing, and this data is also suggesting
fresh long short covering, fresh long short covering, right? The entire segment, as you can see, the entire average segment is suggesting only short covering and fresh long. So tomorrow we will see the long opportunity in HDFC Bank. आपका जो भी setup हो, whatever setup you are using, either it's VWAP, EMA, RSI, प्राइस एक्शन, एनी सेटअप आप कोई भी यूज़ करते हो, जस्ट ट्राई टू लुक सम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अगर सपोज करिए यहाँ पे कल मार्केट गैप अप होता है और इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है, एंड देन देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको यहाँ पे ये जो आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में फिल गो, एंड ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन प्लॉट किया गया दैट इज ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, आई बिलीव दिस ट्रेंड लाइन इज ऑफ 15 मिनट्स, राइट? सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर दिया जाए, राइट? तो ये आपको कुछ अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं. तो दिस वॉज इट. काफ़ी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट. So this is the Excel file, and you can see this graph indicate volume to delivery ratio. So if the volume is like 9th of December, you see the 9th of December volume is almost 5 lakh, almost 6 lakh, right? And apart from this volume, almost like you see 80% is of delivery, right? 80% trading members took the delivery of HDFC Bank. सो ऐसे आप चार्ट को रीड कर सकते हो. आई ट्राई टू लाइक मेक दिस वीडियो ऑन इंग्लिश, मेनली इन इंग्लिश, बिकॉज काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश में बनाइए. सो दो वी आर नॉट गुड इन इंग्लिश, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. और इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया गाइस मैंने आपसे, आई एम नॉट सेइंग यू टू लाइक पे मी समथिंग, बस आई जस्ट वांट कि आप उसको रीट्वीट कर दो यार, है ना? आप रीट्वीट 50 टारगेट पूरा करो. अगर नहीं भी हो पाता, अगर फिर किसी को खरीदना तो मेरे को डीएम कर देना, तो उसमें आपको जो भी चार्ज है मैं अभी से यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग ये, क्योंकि ये सब फ्री में होता है यहाँ पे मेनली. तो उसके लिए मैं आपसे बस एक रीट्वीट मांगता हूँ कि मेरा रीट्वीट का टारगेट आप अचीव करा. तो ये हमारा ट्विटर प्रोफाइल है. इफ़ यू वांट आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो. और दूसरा हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है. आप चाहो तो मैं दोनों का लिंक आपको, ट्विटर प्रोफाइल का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपको किसी भी तरह से हल्की सी भी हेल्प करता है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें हमें, है ना? मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.